India's next phase of vaccination policy kicks off with the centre now taking full control of India's vaccination drive from states. Home Minister Amit Shah is in Ahmedabad to personally review the preparations here. In fact, under the new phase of the vaccination program, the centre will now provide free vaccines to everyone above the age of 18. People above 18 will be allowed to get the jabs at the vaccination centres without prior registering on the CoWIN app. Pre-registration is no longer mandatory as the government and private vaccination centres would provide on-site registration. In fact, the central government there has also capped vaccine prices across the country. Private hospitals are now allowed to charge up to a maximum of 150 rupees per dose as service charge. प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि 21 जून से आज से पूरे देश भर में 18 और उससे ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोगों को केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। मित्रों, ये बहुत बड़ा अभियान है और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। मित्रों, भारत की जनता बहुत गहराई से देख रही है, काम करने वाले को भी देख रही है और काम में अटकन लगाने वालों को भी देख रही है और जो लोग भटका रहे हैं उनको भी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस महाअभियान में पूरी ताकत के साथ लगेगा और भारत को वैक्सीन युक्त, कोरोना मुक्त इस काम को करके हटेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। भारत में सभी नागरिकों को भारत सरकार अपने खर्चे से, केंद्र सरकार के खर्चे से सभी नागरिकों को मुफ्त में टीकाकरण का अभियान आज से तेजी पकड़ रही है। करोड़ों लोगों को प्रति माह टीका लगाया जाएगा। देश में सरकारी, बेसरकारी अनेक संस्थाओं में टीकाकरण की अभियान शुरू हो जाएगी। अगले दीपावली या दिसंबर अंत तक भारत की सभी नागरिकों को टीका लगाने की काम पूरा कर दिया जाएगा। Now, let's take a quick listen as to what Prime Minister Narendra Modi said on free vaccination drive. 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। With the new update to the vaccine policy, which the Prime Minister informed in the beginning of June, certain things have changed. Vaccines are free from ages above 18 and over, and not just that. You don't have to go like for earlier itself, register yourself in the CoWIN app. You can just walk in, and there on the left side you could see a kiosk where actually you could go ahead and get yourself registered, and then you get your vaccination at this point. Now, in the state of Tamil Nadu, so far 1.2 crore people have got vaccinated. The state claims that it has the capacity to vaccinate 3 lakh people per day, which can be increased up to 6 lakh people per day. This is a kind of a major infrastructure creation across the state, as the Chief Minister and various other officials have also very clearly mentioned that as soon as people are vaccinated, it will help them in breaking the chain. The awareness is also really great. We don't see much of vaccine hesitancy in the state of Tamil Nadu. People are coming forward and they are getting vaccinated. One minor problem here is to procure the vaccine, which also the state claims would be sorted out soon, and for the month of June alone 42 lakh vaccines vials are expected, and the process is still going on. Just you could see behind us, all health staffs and officials are here working round the clock to make sure that people are getting vaccinated as soon as possible and the pandemic chain is broken as early as possible. With video journalist Divyan, Pramod Madhav for